Assalamu alaikum. My voice is clear to everyone. I hope so. You are doing well. A very good night to all participants. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईआरपी का विजन देख लेते हैं। जो इको रिवाइवल पाकिस्तान का विजन है वो बेसिकली रिस्टोर करना इकोलॉजिकल बैलेंस को इन पाकिस्तान के अंदर। वो कैसे होगा? वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से होगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिस से होगा और कम्युनिटी ड्राइवन ग्रीन इनिशिएटिव से होगा। और हम अगर इसका ईआरपी के मोटो को देखें तो एक्चुअली नेचर रिवाइविंग और रीबिल्डिंग फीचर्स। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो हमारे जो फाउंडर हैं मैडम खदीजा इफ्तिखार इको रिवाइवल पाकिस्तान की फाउंडर हैं, और को फाउंडर की बात करें तो सर जैनुल आबिदीन, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो सर मुअज्जम अली। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आर इन कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन 6। आज का जो हमारा सेशन 6 है, इसके अंदर हमारा जो बेसिक पर्पस क्या है इस सेशन का। आज का जो हमारे सेशन का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजीज थ्रू अ लोकल लेंस। हमारा जो सेशन है आज का एसडीजीज पार्टिकुलरली 3 इम्पोर्टेंट एसडीजीज के ऊपर हम पाकिस्तान की 3 इम्पोर्टेंट एसडीजीज के ऊपर बात करेंगे। एसडीजी 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 6 के अंदर हमने क्लीन वाटर और सैनिटेशन के ऊपर बात करनी है। नेक्स्ट जो है SDG 13, उसके अंदर हम क्लाइमेट एक्शन, और थर्ड लास्ट जो है SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। ये सब जो है हमारे जो आज के स्पीकर हैं मैम जैनब एक्सप्लेन करेंगी अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इस सेशन में। जो ये मेन सेशन है ये इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है, इसके व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट कि हमने इस सेशन को क्यों डिज़ाइन किया। एक्चुअली हमारी यूथ को कनेक्ट करना ग्लोबल गोल्स के ज़रिए, रियलिटीज़ देखना कि आज ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है वो इन्वायरमेंट उनके लिए सेफ हो, उनको किसी तरह की इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन से पास आउट होना ना पड़े। अगर हमने अपने यूथ को इन लोकल रियलिटीज़ से ना अवेयर किया तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए इस लैंड के ऊपर सरवाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर इस वेदर की इन्वायरमेंटल की कंडीशन एज सच ऐसे रही। तो इसलिए हमारी जो बेसिक नीड है वो ग्लोबल गोल्स जो हैं वो लोकल रियलिटीज़ के ऊपर वर्कआउट करना, तो हमारी यूथ को एम्पावर करना। और जो आज के सेशन के मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो हम उसके ऊपर बात करें तो आज के सेशन के ऊपर अंडरस्टैंड करना है एसडीजीज लिंक टू इन्वायरमेंटल इशू इन पाकिस्तान, और सेकंड वन हमने लर्न करना है हाउ लोकलाइज गोल ग्लोबल टारगेट फॉर रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, और थर्ड वन अवेयरनेस है जिस तरह स्किल डेवलपमेंट है एक्शन प्लानिंग है, हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज की जो हमारी स्पीकर हैं वो मैडम जैनब हैं। अगर हम उनकी इंट्रोडक्शन देख लें तो वो करंटली परस्यूइंग हर एजुकेशन इन बायो साइंसेज, उनकी जो माइनर है वो केमिस्ट्री है यूनिवर्सिटी ऑफ वहाँ के अंदर, और एज अ यंग रिसर्चर भी हैं और एक्टिवली वर्किंग कर रही हैं नाउ फिजियोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन पाकिस्तान। आज का जो टॉपिक है वो उनके सेशन से भी बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहा है, और शी इज़ डीपली पैशनेट भी हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से। और आज के टॉपिक के अंदर वो अपने इंसाइट एकेडमिक जर्नी और इनसे जर्नी से रिलेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्वायरमेंटल इशू से चैलेंजिंग फेस ना करना पड़े। हमारे इस प्रेजेंटेशन के अंदर और जो है सब पार्टिसिपेंट इंगेज रहें, और कापी और पेंसिल अपने साथ नोट्स रखें, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट्स बनाते जाएं ताकि हमारे नेक्स्ट फ्यूचर में हमारे काम आ सकें। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि एनी टाइम किसी भी वक्त, ताकि छोटे स्मार्ट नोट्स बनाते जाएं किसी भी टाइम हमारे लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। जिस तरह हमारे जो बड़े हैं अगर हम उनकी लाइब्रेरी देखें तो कितनी बड़ी बड़ी उनके नोट्स, उनके ईच एंड एवरीथिंग सेफ सेफ होती है। हमारी जैसे हमारे काम आ रही है इस तरह अगर हम अपने नोट्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते जाएंगे हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और गाइडिंग होंगे। और जो ये वेब सेशन होते हैं वेबिनार होते हैं इनको अटेंड लाजमी किया करें, ये हमारी अटेंडेंस के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। और अटेंडेंस सब बच्चों की रिकॉर्ड की जा रही है आल पार्टिसिपेंट की।
जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, तो काइंडली मेक श्योर करें कि जितने भी सेशन हैं, जितने भी वेबिनार हैं, इनको अटेंड किया करें कि ये हमारी अवेयरनेस के लिए है, हमारी आगे आने वाली जनरेशन की एम्पावरमेंट के लिए ही है। हमारे इन्वायरमेंट को सेफ बनाने के लिए किस तरह जो यूथ है ये इंडिविजुअली वर्क करें और हम एज अ टीम किस तरह वर्कआउट कर सकते हैं, हम यही लर्न करते हैं ताकि हम इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर, हमारी डेली लाइफ के अंदर हेल्पफुल हो। और नेक्स्ट जो एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, और सब बच्चे इसके अंदर इंगेज रहें और लर्न करें, एक एक पॉइंट को अपने पॉइंट नोट करते जाएं। जो क्वेश्चन है जिसका वो एंड पे ही और शी कैन डू और आस्क इन अ चैट बॉक्स और रेज योर हैंड, और सबको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर सेशन का। और काइंडली इन सेशन को मिस ना किया करें क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। और एंड पे जो 3 पार्टिसिपेंट्स बेस्ट आइडियाज देंगे हमारे इन्वायरमेंट को सेफ बनाने के लिए, उनके लिए कैश प्राइज भी होंगे। अपने आइडियाज सोचें अभी से, इसके ऊपर वर्कआउट करें क्योंकि अब तो हमारे सेशन का इस इको रिवाइवल फेलोशिप का आई थिंक कुछ ही डेज रह गए हैं। तो इसके ऊपर वर्कआउट करें कि हम किस तरह अपने इन्वायरमेंट को सेफ बना सकते हैं, अपने आइडियाज बताएं, इस डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर डिस्कस करें और बताएं कि जो जिनके बेस्ट आइडियाज होंगे फर्स्ट 3 मेंबर को प्राइज भी दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो काइंडली इसके ऊपर भी तवज्जो करें और बिला ताखीर किसी देर किए बगैर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब मिस जैनब, आज के सेशन को इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा, यू कैन स्टार्ट नाउ। Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Walaikum assalam. Yes. Yes, you are. Okay, let me share the screen. Assalamu alaikum everyone. Hope you're all doing well. I'm Sana Bibi and I'm honored to be here today to talk about SDGs and why they matter for our planet and future generation. So let's start about the session. First of all, I have a question for all of you. Have you heard about Sustainable Development Goal? If yes or no, drop in the chat box. Okay, mostly yes. Okay, nice. Let's move forward. Okay, everyone. Most of you know about the definition of sustainable development. So it is important to note that why modern definition has gained popularity. So we saw the definition of sustainable development in a modern context in 1987 report titled Our Common Future, published by the Brundtland Commission. It stated that sustainable development is the development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. And about this definition, I like three main things. The first one is it does not use any big word or jargons, and most people can easily understand. Second, this is it focus on intergenerational equity. It's mean that we can say that fairness between generations. And third thing is that it balance people and planet. And the Sustainable Development Goal is also known as 2030 Agenda, was adopted on September 25th, 2015, universally. Universally adoption means that every single country, like all 193 UN member states, agree.
and it was built on groundwork of two previous processes that laid a strong foundation. First, we all know about the Millennium Development Goals. The time period is also for 15 years, and it is quite simple. We can say that there are some criticism that were focused on mainly on developing countries or poor countries rather than equally for everyone. They have focused on poverty like number one goal, and universal primary education, gender equality, and child and maternal health. So when we move forward about the difference between SDGs and MDGs, we all know about that MDGs are just for developing countries, mean like poor countries, or they are not for universally, like the developed countries like US or Sweden or Norway. Um, Likewise, SDGs are global goals and apply for all domestic and international. The main focus on of MDGs are main only on poverty reduction, while the SDGs have 17 goals, 169 targets, and 247 indicators for we can say that measuring progress. Next, let's move forward. These are the 17 SDGs, and I just quickly tell you their titles. First one is no poverty, second, zero hungers, and third, good health and well-being. Number four, quality education, not just education. And fifth one is gender equity. Six, clean water and sanitation. Seven, affordable and clean energy. So it is not just clean energy, it is also affordable. Eight, decent work and economic growth. Not just economic growth, we also need decent work. Ninth one is industry, innovation, and infrastructure. Usually it called three I's, and it is the most important one. And 10th one is reduce inequalities and the difference between poor and rich, that's all. And 11th one is sustainable cities and communities. 12th, responsible consumption and production. 13, climate action. This is usually the most favorite one. People know about the climate action most, but does not know about the rest of SDGs. And we need to understand sustainability as a whole. So all of these contribute equally. And next we move to the number 14, life below water, and 15, life on land. And the last two most important are peace, justice, and strong institution. And 17, partnership for the goals. And the five principles of sustainable development agenda 2030, and the five principles are: first one is universality, means that these goals should equally apply to all countries. The second one is inclusiveness, and third, leave no one's behind, and fourth one is interconnectedness. If you are going to study them, they are all pretty much connected. And the most important we require are multi-stakeholder partnership. And what do you mean multi-stakeholder partnerships? It's mean that individual to individual partnership, company to company, and country to country partnership. And these are the five pillars of the SDGs. Now we have to quickly see the five pillars. It is referred as comprehensive
action plan for people, planet, and prosperity. These three are discussed in the MDGs also. But in 2030 agenda also added the notion of peace and partnership to those traditional pillars of sustainability to create the 5 Ps. We can also call the 5 Ps of the SDGs. Mm, as we already know that SDGs are SMART goal. Any of you know about the abbreviation of SMART? Yes or no? So S means specific, M measurable, achievable, realistic, and time bound. So we have 169 targets and 247 indicator. And I just tell you the one thing, out of 247 indicator, 92 of which are environment related. So we move toward the three most important SDGs. First one is SDGs number 6, clean water and sanitation. As I already told you about the targets that we easily measure about the progress every year and every 5 years. So the target number 6.1 about safe and affordable drinking water. They are all these targets are linked together. So first one 6.1, what does it mean? Safe and affordable drinking water. Everyone should be able to drink clean water that is safe and does not make them sick. So it should be easy and easy to get and not too expensive. So next week, I just add you a few targets about SDGs number 6. So next 6.3, improve water quality, wastewater treatment, and safe reuse. And it's talk about clean dirty water before letting back into the nature. So water stays safe for people and the environment also. Next, we have 6.4, increase water use efficiency and ensure fresh water supplies. And the last, we have 6.6, protect and restore water-related ecosystem. It's mean that we should take care about the natural water bodies like rivers, lakes, or wetland because it helps provide clean water and support life. So these SDGs and indicators play important role to measure the progress of every SDG. So the most important is that the question, are we on the track for SDGs number 6 or not? So let's see the recent data from 2025 report. In 2024, about 12.2 billion people did not have access to clean and safe drinking water at home. Many people had to drink water that could make them too sick. And about 1.7 million people did not have basic hygiene at home. And means that like soap or water to, even water to wash hands. And this increase the risk of spread of infection and infectious diseases and illness. And if we see about the school-going children, so about 646 million children in school did not have access to basic hygiene like hand washing. So this affect both their education or their health also. So next, where water stress will be highest by 2015. What is water stress? So water stress
is that not enough water for people needs like drinking, farming, or even industries. It's compare how much water people demand or to how much water is available. So when let's see the globe in dark brown color, the areas show the extremely high water shortage, and in red we see high water stress like 40 to 80%, and in yellow color there are medium to high water stress. By 2025, many countries like included Pakistan, many countries, especially in the Middle East or North Africa and South Africa and some part of America and Africa, also will face serious issues of water shortage by 2050. These areas will need strong water management and also climate strategies to prevent crisis. Next, the most important about the Pakistan, we have a graph about the population and the availability of water per person. In the y-axis, left side, we have the population, and in the right y-axis, we have the water per person available. So the line with, we can say that the shape diamond show the population, and the line with the triangle show the water per person. When we observed this graph in 1961, the population was around 50 millions. And in 1961, each person had the availability of 1500 cubic meter of water per person. And as the time increases, by 2025, it projected to reach our 250 millions population. So by 2025, it expected to fall below even 800 cubic meter per person. So we summarize that the water shortage will be the serious problem if no action is taken. As we see that more people are added, there is less water available per person. This lead to increased water stress and high risk of water scarcity in Pakistan. And next, move toward the another important SDGs related to Pakistan is SDGs number 13, climate action. So all of you know about the Pakistan ranking, as Pakistan is one of the top 10 countries most affected by extreme weather. Even though Pakistan contributed less than 1% of the world population that cause climate change, but unfortunately is suffering the most. So in 2022, Pakistan faced a huge disaster like a massive flood, or we can say that a war flood, that killed over 1,700 people. So another total greenhouse gas emission by sector 2030, we can say that in 2030, the world released about 57.1 billion ton of carbon dioxide, and which is 1.3% more than in 2022. So if we see the energy sector contributing to this, the most important are and the more increasingly contributing to this carbon dioxide emission are energy sector. So 26% come from making electricity, power, and 15% come from the transports like cars, buses, planes, etc. And 10% come from the getting and producing fuels like oil, gas, and 6% come from the buildings like and heating, cooling, etc.
Now we observe the number of natural disasters event per year and their progress. So the red lines show the actual number of disaster each year, and green lines show the how the numbers change over the time. So we can, if we say in early years like in 1950s to 1980s, and there are few disasters each year, mostly one, two, or three. If we moving forward, 1990, the number of disaster began to increase more frequently, and the 20, the, two, the 2010 and saw several peaks, especially 2000 when we see the 2005 or 2010 and 2015. And the number of disaster up to 12 events in some years. So the overall trend is increasingly, which means that natural disasters are becoming more common over time. As most of us know about that, 2024 was the hottest year in the last 175 years. So a wake-up call for our generation, for us as an individual. So the Earth's average temperature was in 1.5 centigrade higher than it was before factories and we can say that machines become common. So according to the World Meteorological Organizations wants that if we wants that even 80% chance that even a hotter year will happen in the next 5 years. So these are the promising and innovation and practices we must follow. So first one is innovation and climate finance tool, means that rise and manage money for climate action. Second one is a nature-based solution, like natural methods for planting trees, restoring wetlands, and protecting forests or to fight climate change and protect people and nature. So the third one is integrating a just transition in the NDCs. A just transitions mean shifting to a low carbon and climate resilient economy. It can also include policies to retain and reskill workers from fossil fuel industries. And it also encouraged to promote green jobs also. The fourth one is gender and environmental data, how climate change affect men and women differently. The last one is climate change awareness and management skills. And it's also helping people how to learn and how to deal with climate challenges that we face mainly today. Next one is another important SDGs 13, life on land, protecting nature and protecting our future. So we already know about that forest cover in Pakistan around 5% from 2015 to 2020, and it did not grow much. But forests are still, if we see the forest loss estimation, and its rates are still about 1.5% every year loss. Around 37% of Pakistan farming land is getting damaged or less useful, means that land degradation. And it also affect the water availability. So the water declined by nearly 30% in 1 year. So it also affect the many activities like farming and affect the
our health, hygiene, and daily life. And it also affects animals and natures also suffering due to water loss. And there is another graph about the annual rate of forest expansion means that how much we gain, and deforestation means how much we lost in the year 1990 to 2020. If we see the graph in dark green colors, it shows the forest expansion, and the light green color, it shows about the forest deforestation. In 1990 to 2000, if we see about it, the forest expansion 8 million hectare per year we gain, and 16 million hectare we lose. It's mean that we lose twice as much as forest we gain. And we move forward 2010 to 2015, we only gain 7 million hectare per year, and the deforest forest loss rate about 12 million hectare per year. And 2015 to 2020, we only gain about 5 million hectare and loss was 10. So if we say that deforestation is still happening, it's in 2015 to 2020, its rate is low, but at slow rate it is also happening. And the major initiative in Pakistan about the SDGs 15 are plant for Pakistan and 10 billion trees. And the second one is Living in this initiative and protected areas initiative. Now we have a breakout room activity. Are the breakout Tessin, are the breakout room ready or not? जी रेडी। तो आप सब ये रूल्स पढ़ लें कि आप लोगों को एक एक रूम असाइन होगा, उसमें आपने अपनी टीम का एक नाम रखना है, एक लीडर असाइन करना है, और आपने प्रोडक्टिव डिस्कशन करनी है, जो मेंशन्ड क्वेश्चंस हैं। और फिर जब आपका ब्रेकआउट रूम सेशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे मीटिंग में आके कंक्लूड करेंगे कि आपने क्या डिस्कशन की, कौन से क्वेश्चन पे। तो मैं आप लोगों को असाइन करूँगी। जैनब, आप स्क्रीन शेयर रखो जो आपने शेयर की हुई थी ना ब्रेकआउट रूम वाली। और जिसने ब्रेकआउट रूम नहीं ज्वाइन किया तो काइंडली ज्वाइन कर लें, हमें नज़र आ रहा होता है कि कौन से बंदे ने ज्वाइन किए, कौन से बंदे ने नहीं किए।
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Am I audible?
आप लोगों में से कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रेकआउट रूम ज्वाइन नहीं किए थे? ये हमें नज़र आ रहा होगा। तो काइंडली जो आप लोगों को असाइन होते हैं तो आप लोग वो रिस्पेक्टिव ब्रेकआउट रूम ज्वाइन किया करें, क्योंकि वो आप लोगों की ही डिस्कशन के लिए, आप लोगों की लर्निंग का पार्ट है। आई होप आप सबने ब्रेकआउट रूम्स ज्वाइन किए हों। अगर किसी ने नहीं किए तो काइंडली आप लोगों के लिए ही हमने ब्रेकआउट रूम्स रखे हुए होते हैं, आप लोगों की लर्निंग का पार्ट है। तो आप लोग काइंडली उस चीज़ को ध्यान में रखा करें और उसको ज़रूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि हम फिर आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या डिस्कशन किया। तो जिसने नहीं ज्वाइन किया था काइंडली नेक्स्ट टाइम से आप सबने जो असाइंड ब्रेकआउट रूम्स हैं वो ज्वाइन करने हैं। May I start the scene? यस यू कैन शाफिया। आपका रूम कौन सा था? हमारा रूम नंबर 1 था। ओके ठीक है, आप स्टार्ट करो। ओके, सो हमारे पास हमारा रूम नंबर 1 था एंड वी हैड अराउंड 5 to 6 मेंबर्स, जिसमें से एक मेंबर ने बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया एंड बाकी हम सब ने डिस्कशन की है। तहसीन, काइंडली आप मुझे कंफर्म कर सकती हैं कल की एक्टिविटी में वी हैव टू एग्री ऑन सम वन थिंग। आज ये कंपलसरी नहीं था। नहीं नहीं, आज आप लोगों के अपने ओपिनियंस, क्या आप लोग क्या उसके बारे में कंक्लूजन रखते हैं? ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट की थी मैंने डिस्कशन, तो मेरे लिए फॉर द क्वालिटी एजुकेशन द SDG 4 इज़ वेरी क्लोज टू मी। और वो क्यों, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, उसको मिलनी चाहिए। अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ जो अर्बन एरियाज़ के बच्चों को मिल रही हैं तो उनका बिल्कुल इक्वल राइट रूरल एरियाज़ के बच्चों के लिए बिल्कुल है। और मैं इससे कनेक्ट क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे ऑब्जर्व किया है, वो बहुत से ऐसे बच्चे जो कि इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और उनके इतने सारे ड्रीम्स होते हैं कि हम ये बन सकते हैं, हम ये बन सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटीज, दे डू नॉट हैव रिसोर्सेज। तो मुझे लगता है कि बीइंग एन इंडिविजुअल, अगर मैं इसके लिए कुछ अपना एक्शन बताऊं, तो व्हाट आई हैव डन इज एट इंडिविजुअल लेवल, अभी जो मैं कर सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट क्या लेती एक्शन, क्या नहीं लेती। मैंने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी दैट नेम्ड एज द सिटीजन्स फाउंडेशन TCF, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में और कम्युनिटीज में अपने कैंपसेस जो है वो ओपन करती है। और वो यूजुअली वो कम्युनिटीज़ और एरियाज़ होते हैं जो कि इतने अंडर प्रिविलेज होते हैं कि वहाँ पर इवन गवर्नमेंट स्कूल्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो TCF के मोर देन 2000 कैंपसेस हैं और मैंने रिसेंटली वहाँ पर उनका समर कैंप ज्वाइन किया था और उनका अभी एक और प्रोग्राम होगा, तो आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन दैट एज वेल। सो अपने बिहाफ पे अभी एज अ स्टूडेंट मैं यही कर सकती हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं इस ऑब्जेक्टिव के लिए, मैं उनके साथ कंट्रीब्यूट करूँ। देन वी हैड सना इन आवर रूम। सना ने SDG 17 के बारे में बात की थी, दैट वाज रिलेटेड टू द डिफॉरेस्टेशन, कि हमें बहुत सारे जंगलात जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें वुड से बनती हैं, उनके लिए जंगल काटे भी जाते हैं और नए पौधे लगाए भी जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि अगर आप जितनी क्वांटिटी में जंगलात जो हैं उनको काट रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, उतनी क्वांटिटी में आप उसको लगाएं भी। प्लस मैंने उसमें ये चीज़ ज़रूर ऐड की थी कि हमारे पास जो हम लगाते हैं पौधे या दरख्त लगाते हैं, उनका फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अक्सर होता है प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं और पौधे लगते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, तो उनका फॉलो अप भी ख़त्म हो जाता है। देन वी हैड हफ्सा, उन्होंने SDG 3 के बारे में बात की थी, दैट वाज रिलेटेड टू द हेल्थ। उन्होंने एक कंडीशन का ज़िक्र किया जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स को जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से होती है, जब वो अपने पेपर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, अपनी स्टडी को मैनेज कर रहे होते हैं, साथ-साथ और इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। शी हरसेल्फ फेस्ड दिस सिचुएशन जब उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो उन्होंने इसके लिए ये काम किया है कि उनको क्योंकि इसके बारे में पता चला था और उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया एंड देन शी केम टू नो कि क्या हुआ। अब उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में इसके बारे में एक सेमिनार अरेंज किया जो कि उन्हें आई गेस बताया था कि वो अपकमिंग वीक में करेंगी, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसकी मैनेजमेंट के बारे में और इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दी जा सके। एंड देन वी हैड इर्तका एंड मलाइका।
सो इर्तिका ने जो एक बात की थी वो ये कि जो हमारे पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उनको लगता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे वो चीज़ कम कर सकते हैं। स्पेशली हम सबने इस बात पे एग्री किया था कि हम जब से इस फेलोशिप में आए तब से हम ज़्यादा फ़ील करने लगे हैं कि हम कहाँ-कहाँ प्लास्टिक यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम उसको कम करें। एंड आई गेस दिस वाज़ द ब्रीफिंग फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो रूम नंबर 2 से कौन कंक्लूड करेगा? काइंडली कम फॉरवर्ड। Okay, let's move forward. Any of you want to share the discussion? You are welcome from any group. अगर किसी और रूम ने शेयर करनी है तो काइंडली कर दें, फिर हम वापस सेशन की तरफ जाएं और फिर कंक्लूड करें। Assalamualaikum. I'm Dr. Nazakar Ali from the group 4 और हम सारे मेंबर्स ने एग्रीड किया है SDG 15 पे लाइफ ऑन लैंड और उस पे हमारा अच्छा डिस्कशन हुआ। सारे मेंबर्स ने कंट्रीब्यूशन अपना अपना शेयर किया। हमने फाइनलाइज किया कि हमें डिफॉरेस्टेशन के ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए और उसको थोड़ा डीपली देखना चाहिए। जैसे लास्ट ग्रुप वाले मेंबर्स ने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, जितने प्लांट कट हो रहे हैं उतने प्लांट लगाने चाहिए। तो सॉरी टू से दिस इज नॉट पॉसिबल और ये इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें अभी नहीं मिलेगा। अभी जो हम प्लांट लगाएंगे, एक 20 साल का या 50 साल का पुराना दरख्त काट के हम जो है ना नया लगाएंगे तो वो हमें डेफिनेटली 20 साल बाद या 30 साल बाद उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो हम सारे इस चीज़ पे एग्रीड हैं कि डिफॉरेस्टेशन को किसी तरह से ओवरकम किया जाए। बीइंग अ रिसर्चर एंड मैं अपना स्टार्टअप भी चला रहा हूँ, उसमें वी आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबल मटीरियल्स टू अवॉइड द डिफॉरेस्टेशन। जैसे मैंने मिसाल दी, टेक्सटाइल के अंदर फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं और वो फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको विस्कोस कहते हैं, दैट इज फ्रॉम द प्लांट्स। तो उसी का अल्टरनेटिव हमने ढूंढा है कुछ वाइल्ड प्लांट्स है ना इकोसिस्टम से, जो वैसे डिस्कार्ड हो जाते हैं, जिनका कोई पोटेंशियल यूज नहीं है। तो दैट वाज एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स। दूसरा इशू ये था कि जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया और सारे लोग एग्री भी हुए कि जिन जिन एरियाज के अंदर गैस फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो 60 या 70% एग्रीकल्चर बेस है और ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन है और उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं होती गैस वगैरह की। तो जिसकी वजह से ज़्यादा वो ट्रीज़ को कट करते हैं और उसको एज अ बर्निंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो उनकी बेसिक नीड है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए। Third factor, we talk about the plantation in the big cities and उसका जो इम्पैक्ट है। कराची की हमने मिसाल ली और कुछ लोगों ने उसके ऊपर भी कमेंट्स किया कि सिटीज़ के अंदर भी प्लांटेशन होनी चाहिए और अगर वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन हो रही है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेंड होती जा रही है। मिसाल दी कि कराची के करीब करीब जितने भी एरियाज़ हैं उसको जो है ना कन्वर्ट किया जा रहा है फॉर द लिविंग के लिए। तो वहाँ पर भी हमें इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि हम जो ना फ्लड से और दूसरी क्लाइमेटिक जो मसले हैं, एक्सट्रीम हीट है, इनसे हम बच सकें। जी, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you everyone who want to share their thoughts Assalamualaikum. about this. Walaikum salam. रूम नंबर 5 से क्या हम अपने थॉट शेयर कर सकते हैं? Yes. जी, रूम नंबर 5 से मोहम्मद आफ्ताब। हम जो जिन इश्यूज के ऊपर जो है वो एग्री हुए हैं वो है प्लास्टिक पोल्यूशन है और इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कि लोकल लेवल पे भी हमें इफेक्ट कर रही है और इसी तरह जो है वो हमारे इकोसिस्टम को भी इफेक्ट कर रही है और इन्वायरमेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं और इनको हमने कनेक्ट किया है SDG 12, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग और SDG 14 लाइफ बिलो वाटर। तो इनके साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। एक और जो हमारे एक फेलो है उन्होंने एक इश्यूज उठाया था,
वो था बलूचिस्तान में स्पेशली वाटर के लिए, क्लीन वाटर के इश्यूज़ में। तो अगर हम इनका एक्शन जो है वो हमने जिनके ऊपर हम जो है वो मुतफ़िक हुए हैं, वो ये है कि प्लास्टिक फ्री प्रैक्टिसेस जो है कम्युनिटी में उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए और एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस सेशंस हों। इसके अलावा जो है वो ना स्कूल्स के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लास्टिक के लिए जो है वो लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस सेशन किए जाए, वॉलंटियरली काम किया जाए और बस इतना ही। थैंक यू। Okay, I truly appreciate you all. As we know that these goals are linked together. अगर हम एक पे काम करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे पे पॉजिटिवली पड़ता है और एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड है। तो कोई भी एक्शन हम लेते हैं, चाहे वो स्मॉल हो, इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे, वो कंट्रीब्यूट करता है इसमें। So let's move forward and the screen is visible or not? ब्रेकआउट सेशन आ रहा है। It सॉरी, is आप स्क्रीन visible, शेयर but नहीं। all Okay, details are in. now जी, अभी आ Yes, गया now it is. विजिबल। okay. Let's move forward. How our nation performing on the Sustainable Development Goals? So we see the present report on SDGs 2025. So we start from Pakistan, and Pakistan ranked 140 out of 167, and the score is 57.97. So Pakistan has shown some improvement in the following goals, and we talk about number one SDG, no poverty, and the poverty rate fall from 55% to 38%. Due to the programs like SARS program and other initiatives taken by government or community level. In SDGs number 6, we also have a positive response in SDGs number 7, and in SDGs number 14, and we also have improvement in this, and SDGs number 7, the renewable energy capacity also increased from 1,000 megawatt in 2015 to 2,500 megawatt in 2024. So I think it's a very good plus point for solar or hydropower growth in Pakistan. And there are some SDGs we have a limited progress, like SDGs number 2, zero progress, and also 3, good health and well-being. And about SDGs number 10, there is a misinformation or due to unavailability of data. We have no report about this, whether it is increasing or decreasing. So in Afghanistan, ranked 160 out of 167, and the positive point about that SDGs number 13, and they show that they achieve their goal about climate action and the life on land also. So in number 10 SDGs, gender inequalities, so the data is still missing. So we'll move forward. About China, and China ranked 49th by 167 countries, and the score is 74. And China show increasingly progress in SDGs number 1, no poverty, and number 9 we call as 3 eyes, and also in if we there as China increasingly progress in all of these SDGs, but still there is a decreasing point in climate action, and the rate is not significantly increased.
And if we talk about quality education, so there's also a missing sector. And the India rank 99 out of 167 countries. India also increasing in SDGs number 1 and many other SDGs like SDGs number 10 and 7 and 8. So, and the most important is that strategies and how we take action as a youth or community level as an individual. So the first one is localize the SDGs. We need to adopt the global uh, goals to reflect the local community in local language, culture, and this also help people to relate the goals more personally. And the second one is raise awareness through creative education. And as we know that awareness is the first step to action. Like we can say that, for example, sharing real life stories or case studies to make SDGs relatable. And also we use social media campaigns or other social media platforms to spread awareness, share solutions, or engage audience or people. And next, we have a community-based campaign like cleanup drives or awareness work or plantation activities to involve schools, students, or universities fellows. Last one is youth leadership and innovation. And engage youth projects such as we should conduct low cost water filters or mobile apps tracking food waste. The sixth one is collaborate with stakeholders, and this is the SDGs number 17, the most important and the pillar of all the SDGs, that how we collaborate with the local government or government officials or NGOs, educator or business, even the religious leaders, and to support SDGs implementation and make it easy to implement through the country or community. So protecting nature start with us. So SDGs is not about agenda. They are a personal responsibility. So no action, as we are already told about there, that no action is too small. Whether you speak up in right now or even recycle a bottle or educate people, friend, or plant a tree, you are contributing to something bigger than yourself. And so today I encourage you to carry this awareness forward and be the voice, be the spark, and be the change, because together we are not just dreaming of a better world, we are building it. Thank you so much. Anyone has question you can ask. I have a question, may I? Yes. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया फर्स्ट ऑफ ऑल सारे एसडीजीज को एंड स्पेशली द यूज ऑफ स्टैटिक्स एंड डेटा वाज एंड रियली इनोवेटिव वे ऑफ इंडिकेटिंग कि हम किस लेवल पर हैं और किस लेवल पे इम्प्रूवमेंट हो रही है और कहाँ प्रोग्रेस हो रही है. मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और वो ये कि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी और आइडियल बातें की हैं क्योंकि सारे ही एसडीजीज ऐसे हैं जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं इस वक्त अगर हम प्रेजेंट पे देखें तो. आई जस्ट वांट टू आस्क, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि हमें इन एसडीजीज को अचीव करने से रोकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप बात करें या इंडिविजुअल लेवल पे. सेकंड ये कि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, और पहले भी मुझे लगता है कि हमारे पास क्योंकि एसडीजीज एक वॉलंटियर नेचर ऑफ एंगेजमेंट होती है सारी कंट्रीज़ के लिए,
तो उस तरीके से सारी कंट्रीज अकाउंटेबल नहीं होती हैं और उनकी तरफ से बहुत एक इनसफिशिएंट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि एक वॉलंटियर चीज़ है, एवरीवन इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू अडॉप्ट और नॉट टू अडॉप्ट इट। तो हर एक कंट्री को इस चीज़ के लिए किस तरह से अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, क्या इस लेवल पे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है कि सब लोग अकाउंटेबल हों अपने एक्शंस के लिए। मुझे लगता है सिर्फ तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक वॉलेंटरी चीज़ हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं इंडिविजुअली भी, और अगर हम गवर्नमेंट के लेवल पे भी बात करें तो अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ पे बता सकें तो प्लीज़। ओके, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एसडीजीज है ये ऑल कंट्रीज के लिए इक्वली अप्लाई खुद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यूनिवर्सली है, तो अगर हम हर्डल्स की बात करें तो ऐसा इंडिविजुअल और ऐसा गवर्नमेंट लेवल, तो हम बहुत सारी ऐसे एसडीजीज हैं जिनको हम कुछ एसडीजीज हैं जिन पे हमारा फोकस कम है। लाइक अगर हम देखें तो क्वालिटी नंबर 3 एसडीजीज जो है गुड हेल्थ और वेलबींग पे, तो इसमें हमारा जो रुझान है वो इसकी तरफ कम है। तो अगर हम एक किसी को भी इग्नोर करेंगे या उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो वो इफ़ेक्ट सारों पे पड़ेगा, एजुकेशन पे पड़ेगा, हमारे हेल्थ पे पड़ेगा। इस तरह आपने सेकंड क्वेश्चन में बात की है कि हम इनको कैसे इक्वली अप्लाई हर कंट्रीज़ को कैसे अप्लाई कर सकें। तो 17 गोल जो है पार्टनरशिप फॉर द गोल, ये इसीलिए है क्योंकि ये एमडीजीज में नहीं था, ताकि हम एक-दूसरे के साथ हम कैसे लिंक करते हैं, किस तरह ऑर्गनाइज़ेशन और कम्युनिटीज़ के साथ लिंक करते हैं ताकि हम 2030 से पहले-पहले इन सबको अचीव कर सकें। आई होप इट्स थैंक यू ज़ैनब। एक्चुअली हम मुझे ये लगता है कि हम लोग जो हमारे बहुत इमीडिएट रिस्क वाले एसडीजीज हैं, जैसे अभी हमें इन्वायरमेंट का थोड़ा पता चलना शुरू हुआ है, जैसे ही वेदर एक्सट्रीम होना शुरू हुआ है या हमारे पास वाटर का थोड़ा सी स्कार्सिटी हुई है तो पता चलना शुरू हुआ, तो मुझे लगता है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी योर आंसर वाज वेल। यस, ऐसे ही है जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्लाइमेट एक्शन और जो वाटर और लैंड के बारे में तो बहुत अच्छे से उनको इन्फॉर्मेशन है, बट रेस्ट ऑफ द एसडीजीज आल्सो प्ले देयर प्रीशियस रोल, और इन सब से मिलके हमारा जो रिपोर्ट है, जो हमारा इंडेक्स है वो बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पे जो शाफिया ने जो क्वेश्चन किया है उसका एक जो मेरे हिसाब से जो इशू है वो ये भी है कि हमारे यहाँ पॉलिसी जो है गैप्स हैं वो भी है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है और फंडिंग के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। यस, हम पॉलिसीज़ तो बना लेते हैं बहुत सारी, बट उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको लोकल लेवल पे हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है फिर। जी जी और बिल्कुल। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम जैसे विलेजेस एरिया या इस तरह के साइट हैं या स्कूल्स हैं बैकवर्ड एरियाज में, तो उनमें हम लोकल लैंग्वेज पे सबसे पहले उनको गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे इसको, और रियल अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो हम ये नहीं उन्हें कह सकते कि एसडीजी नंबर 1 है तो वो पॉवर्टी के बारे में कहता है तो हमें इस पे कोशिश करनी चाहिए। तो हम उनकी एग्जांपल लेके हम उनकी ऐसे बता सकते हैं कि हम इन उनको कौन-कौन से चैलेंजेस और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स का को फेस करना पड़ रहा है। तो इस तरह हम उन्हें बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। एनीवन? अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें।
अस्सलाम वालेकुम। मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जैसे अभी हमारे एक मेंबर ने शेयर किया, डेफिनेटली हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। जैसे बीइंग ए रिसर्चर, मैंने अभी भी बात शेयर की थी आपसे। I was really disappointed when I submitted my proposal to some NICs and that was not selected. I was working on the health and well-being issues on sanitary pads. तो उसके लिए भी देखें, कोई भी मसला है, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, डेफिनेटली हमें बाहर के एनजीओज या बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस वो इस चीज़ को समझते हैं। आई डोंट नो लोकल लेवल पे हमारे पास क्यों उनके लिए इन चीज़ों के लिए फंड्स नहीं है या उसके लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं है। तो एवरी एसडीजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली स्टार्टिंग, जैसे अभी आपने जैनब ने बात शेयर की कि एसडीजी 1 जो है, डेफिनेटली एवरीबॉडी कैन प्ले as their part from SDG 1 to SDG 17, and definitely we need more collaboration and more importance to the climate action, SDG 13 and water on land and life on land, sorry, जो वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है। सो दैट मीन्स जो इनका कलर कोड है वो भी एक सिंबल है, वो हमें बताता है कि किस चीज़ की क्या वर्थ होनी चाहिए और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर और हमारे लैंड के लिए और इकोसिस्टम के लिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने शेयर किए अपने थॉट्स। अच्छा मैम, डेफिनेटली मेरा सॉरी जी सॉरी कंटिन्यू करें प्लीज, प्लीज कंटिन्यू करें। डेफिनेटली जैसे आपने बात किया कि आजकल हमारे पास वाटर स्कैर्सिटी और बिकॉज वाटर जो है वो इसी की वजह से लाइफ है अर्थ में, तो सो इट्स आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ओके, एनीवन यू कैन अच्छा मैं यहाँ स्पीक। पे मैं अपना यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो शेयर करूँगा कि एसडीजी 4 जो हमारे पास है क्वालिटी एजुकेशन की, तो मिलियन ऑफ चिल्ड्रन जो है हमारे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ का लैक्स भी है और इसके अलावा जो है वो बहुत से और भी इश्यूज हैं। तो इसके रिलेटेड जो है मैंने एक अपना एक फाउंडेशन एक बनाई हुई है। उसका जो है वो मकसद ये है कि वो हम जो है वो ऐसे चिल्ड्रन को एजुकेशन देते हैं जो कि स्कूल की फीसेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो सुबह के टाइम को स्कूल जाएँ। तो वो जो है सुबह को जो है वो स्कूल नहीं जाते, अपना जो है वो उनका रोज़गार है उसके सिलसिले में जाते हैं और शाम के टाइम जो है वो हम उनको एजुकेशन देते हैं। तो आई थिंक इस तरह का भी कुछ किया जाए, जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग इसको जो है वो हम आगे लेके चलें ताकि हमारे जो करीब के जो गरीब तलबा हैं या ऐसे तलबा जिनके कोई और इश्यूज़ हैं, तो हम उनको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो फराहम करें। यस ऑफ कोर्स, आप का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसी तरह जब सारे मिलके अपना एक छोटा छोटा पार्ट और छोटा एक्शन भी प्ले करेंगे इसमें, तो वी हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट। तो आई थिंक वी हैव नो क्वेश्चन। Ma'am, you can ask your yes. Assalamualaikum. Yes, thank you. Actually, there was a point that came in my head many SDGs are interconnected, and but some progress on some seems to come at the expense of others. Like if we talk about SDG 7, that means that affordable and clean energy. So for affordable and clean energy, if we build dams, it would come at the expense of like expense of harming biodiversity, as we have to create land for that, and it can also cause deforestation. So how can we make sure कि हम कोई SDG को अगर implement कर रहे हैं तो दूसरी SDG पे उसका impact ना हो, कोई negative impact ना हो, इस ट्रेड ऑफ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ओके, डेफिनेटली ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक है, बट
बात वही है कि हमने ऐसे एक्शन और पॉलिसीज का मकसद यही है कि हमने जो सारे जो फैक्ट है उनके काज हैं और कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं इन सबको हमने देख के उसको अप्लाई करना होता है और उसको इनिशिएटिव लेना होता है। तो अगर हम एक अच्छी इनिशिएटिव और अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तो इसका रिस्क भी उतना ही कम होगा। अगर आप लोगों में से किसी और के कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं और हम आपके साथ एक एक्टिविटी डिस्कॉर्ड ग्रुप में शेयर करेंगे, वो एसडीजी से रिलेटेड है। आज हम शेयर करेंगे, उसकी डेडलाइन है कुछ दिनों की, तो आप लोग वो आराम से फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा हो इस सेशन से। और इस पूरे वीक से अभी तक जितनी फेलोशिप में हमारे पास सेशंस वेबिनार्स गए, नेक्स्ट वीक हम आपसे मंडे को मिलते हैं एक और वीक, एक और एजेंडा और एक और सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।